Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the discovery of proton. In the discovery of electron, जो हमने already पढ़ा है, उसमें आपने समझा that electron was accidentally discovered by J.J. Thomson while doing the discharge tube experiment on gases. कि यदि से gases पे experiment करन और उसकी gases क्या carry करा electric current के न, he took the gases in a glass tube fitted with the two electrodes, positive and negative electrode, connected them with a battery, a high voltage battery of 10,000 volt. A current of 10,000 volts was passed through the glass tube, or different atmospheric pressure bet. Gases test it was found at low atmospheric pressure of 10 raised to power minus 2 atmospheric pressure. Gas must be current pass, gas to go glow. And in atmospheric pressure further decrease करना आया तो फिर वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया the glowing stop, but ये गैस ट्यूब लोग emit करने light from the anode, यानी anode की साइड लग गैस ट्यूब उसमें चमक पौध गए a greenish light आ गई create from the anode of the glass tube, that's called fluorescence. और ये अथ observation आई करने की fluorescence किस गए अथ मुझ पौध ये greenish light किस कनन गए अथ anode उस मुझ पौध. It was found there are some rays, some particles are bombarding this anode, in glass rod on the anode side. In particles cathode pet near anode strike glass tube anode strike study karna, it was found these were negatively charged particles moving in this gas from cathode towards anode, or strike yet karna chamak. And these rays, which was constituted by these negatively charged particles, were called as cathode rays. And further, it was observed these cathode rays are made up of particles, charged particles, and the charge of the particle was negative, क्योंकि वो negative से positive की तरफ जा रहे थे, इसलिए उन particles की charge negative थी, and these negatively charged particles were later named as electron. This is how electron got discovered. अब देखना है कि ये एटम्स में ये चीज दरियाफ्त गो कि एटम्स में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो इट वाज सर्टन, इट वाज ऑब्वियस कि देयर मस्ट बी एन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल एज वेल. के पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज ते गस एटम्स में आसनी कैज गस आसनी कैज कि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट्स में एटम वुचन छ एटम छ न्यूट्रल मीन्स नीदर इट बिहेव्स एज पॉजिटिव नॉर इट बिहेव्स एज नेगेटिव. It behaves as a neutral. और neutral है तेली ऐसी ये ज charges opposite charges equal आसन quantity में. वो अगर ये gaseous atom में negatively charged electron discover गई, तेल ये पाना indicate करन कि there must be some positive charges in the same atoms. यम at negative charges neutralize करित अथ से gases क्या आसन बनावन neutral. क्योंकि gases ये कहते atom छ electrically आसन neutral. It was in 1886. It was in 1886. One of the scientists, E. Goldstein, repeated the same test glass tube or discharge tube experiment. इसने यही एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया क्योंकि क्यूरियोसिटी रह गई कि अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या गैस में हेकन ये हेकन तेल मतलब नेगेटिवली चार्ज अत डेफिनेटली कह चार्ज सह बैलेंस करान यु एक्सपेरिमेंट रिपीट कोर व्हेन ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट एंड माइन्यूटली ऑब्जर्व्ड एट लो एंड लाइकवाइज कि उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लो किया बाय इवैक्यूएटिंग द गैस विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप यहाँ से. तो फिर एट लो प्रेशर ही ऑब्जर्व्ड कि व्हेन द टाइम व्हेन द कैथोड रेज वर स्ट्राइकिंग द एनोड, यानी तम टाइम यस पर हसा कैथोड रेज स्ट्राइक करा एनोड्स, एट द सेम टाइम देयर वर सम रेज दैट वर स्ट्राइकिंग द कैथोड. चमक फ्लोरेसेंस न मगर ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करना या वचन कि ये इस पर कैथोड रेज आ स्ट्राइक करा एनोड्स, एट द सेम टाइम हसा कह रेज तम यम इन रेजन मुखालिफ पकन यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन पकन, एंड दे वर स्ट्राइकिंग द व्हाट कैथोड. And these rays
क्योंकि emission from they were coming from the anode and striking the cathode go no ray यही same experiment को repeat procedure बिल्कुल same तो इसी experiment में ये देखा गया कि जिस time cathode rays strike कर रही थी anode को at the same time anode rays were striking the cathode there were some rays coming from the anode and some particles coming from the anode some rays coming from the anode striking the glass rod at cathode. These rays which were striking the glass rod at cathode were called as anode rays. He found this anode rays. He discovered the anode rays in this discharge tube experiment which were striking the cathode and were originating from anode. Yeah, these were originating from anode and were striking the glass tube at cathode. Further observations led to the discovery. In further observation these anode rays consist of positively charged particles. Positively charged particles. Hence, these rays were also called as positive rays. Positive rays, or they are called as canal rays. And the particle that constitutes these positive rays, yani this particle, actually particle rays in his forms anode pe cathode strike karan chhe, this positively charged particle was named as positively charged particle was named as proton. This is how proton got discovered by E. Goldstein. कि इत कन हसा cathode rays negatively charged particle हंस बनाम सा rays cathode पे anode strike करन से same time हसा छ अत मुख्तलिफ के rays पकन यम हसा anode पे cathode कुन पकन छ क्योंकि तुम पकन positive terminal पे negative terminals कुन they are constituted of positive charged particles and these positive charged particles were named as protons. मुख्तलिफ गैसों से आई एक्सपेरिमेंट करना और तमाम गैसों में आई वुचना कि दुश्मन किस्म रेज गई positive charged rays and negative charged rays and at the conclusion it was found कि atoms मंज छ एकस कुन प्रथ कुन मैटर किस atoms मंज छ दई किस्मिक particles आसान मौजूद that is proton and electron and it was a major setback to the Dalton's atomic theory यात में Dalton वोनमुत ओस that atom is the indivisible particle. But these experiments led to the discovery of proton and electron. And certainly, whole setback, so theory, so you discard, the concept of discard, kya? Ki atom chana indivisible. Ki? Bulki atom kya shi? It is divisible. Katmashi divisible. It can be divided. It can be broken down into what? Electrons and protons, because it is made up of electrons and protons. So two subatomic particles were discovered. अब इस प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी है इट व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 1 द मास ऑफ दिस प्रोटॉन ये आपको याद रखना है मास ऑफ दिस प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम Hydrogen atom is the lightest of all the atoms. Its mass has been taken as 1 atomic unit. Atomic mass of hydrogen is 1. So we can say that the mass of proton is also 1 atomic mass unit. And or we can say that mass of proton is 1846 times. आप मुझे कोई खुद बता सकते हैं इसके आगे क्या लिख सकते हैं mass of proton is 1846 times शाबाश greater than that of electron, that of mass of electron. यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास हाइड्रोजन एटमिक मास खुद 1846 टाइम्स कम अब प्रोटॉन मास ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम
इसलिए है कोई वो नित कि mass of proton 1846 times to that of the mass of an electron. अब जो चार्ज की बात है, शायद नीचे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूं, the charge of proton is equal to that of the charge of electron. How we can say that charge of proton is equal to that of the electron? क्योंकि दोनों एक ही एटम में मौजूद होते हैं. An atom is naturally neutral. Atom is electrically neutral. और neutral है कि तेली ऐसित ये आत्मस positive and negative charge क्या है बराबर. वो अगर electron charge तो proton charge बराबर आश्रित के तो फिर atom neutral नहीं हो सकता है. लेकिन atom is naturally neutral. It indicates that the charge of proton is equal to the charge of electron. क्योंकि अगर एक एटम, so that's for example hydrogen is an atom, इसमें जो एटम है उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. इट कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स कि चार्ज इज इक्वल बट अपोजिट. सिर्फ फर्क इतनी है, द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंस इज दैट इट इज अपोजिट इन ईच अदर. खसलत में हम डिफरेंट, ताकत बराबर मगर खसलत में डिफरेंट. वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम ये लिख सकते हैं is equal, it is not almost equal, it is equal to that of electron. और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अब इसकी चार्ज क्या है, इट इज 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलोम. लेकिन इट इज विद पॉजिटिव साइन, यानी पॉजिटिव चार्ज है 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलोम. इलेक्ट्रॉन की चार्ज है यानी नेगेटिव 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलोम. The charge of proton and the charge of electron is equal but opposite. ये आपको याद रखना है. The charge of proton is equal to that of the electron. It is 1.6 positive 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb for proton and negative of 1.6 into 10 raised power 19 coulomb of that of electron. तो हमने क्या जाना अभी तक कि एटम, जिसको हम अभी डाल्टन की थ्योरी में कहा जाता था कि एटम इज इंडिविजिबल. नाउ वी गॉट दैट द एटम इज डिविजिबल. एटम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. इज अ यूनिट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. सिर्फ इन दो में डिफरेंस क्या है, पहले देखो डिफरेंस क्या है. एक है कि इनकी चार्ज बराबर है लेकिन अपोजिट. दूसरी डिफरेंस जो इनकी अहम है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कितना ज्यादा है, कितनी डिफरेंस है, 1846 टाइम्स. दैट मीन्स अगर ये मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर एक त्रकली प्रोटोन अकिस मज त्रुमत 1887 ग्राम, बेकिस मज त्रोमुत 1 ग्राम. क्या इस 1 ग्राम की कोई अहमियत है? इस 1846 के सामने इट कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल. ये इसी तरह कि अगर अस खंड से तोलन और अत खंडस पे पत रेई खसान. अब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम चीनी की मतलब इसका एक वजन नाप रहे हैं तो फिर अगर अत पे रेई खस, क्या हम इसका तो एक वजन है, तथ वजन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम दुकानदार को ये नहीं कहते हैं कि अत खुद रेई हुन वजन, क्योंकि the mass of the ant compared to that of the sugar is negligible. इसी तरह आप देखिए mass of proton denoted by P, it is 1846, yeah, it is that is equal to 1 unit. ठीक. Mass of electron, it is equal to 1 divided by 1846. यानी 1 करें 1846 his, that you see his one, that is equal to mass of electron. Go, that means in comparison mass of electron is negligible. It is negligible. यानी it is negligible. तो एटम जो है ना, अब आप समझिए यहाँ पर एटम जो है ना, ये किसका बना हुआ है, फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब अगर एटम का मास हम लेंगे तो आप इसे पूछा जाए कि बताओ एटम का जो मास है ये किसकी बदौलत है, इज इट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होना चाहिए, द मास ऑफ द एटम इज ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन. क्योंकि प्रोटॉन का मास 1486
यूनिट से, दैट्स इक्वल टू 1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन का मास इस प्रोटॉन की निस्बत 1 यानी 46 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का मास 1846 टाइम्स लेस है किससे, प्रोटॉन से। तो वी कैन इजीली से दैट कि मास ऑफ द एटम इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटॉन। तो एटम का जो भी वजन होता है वो किससे होता है, प्रोटॉन से, बिकॉज द मास ऑफ एटम इज टेकन एज नेग्लिजिबल। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल, 1930 तक it was believed that all mass of the atom is because of its proton, यानी एटम के अंदर जो भी मास है it is because of its proton। ठीक, और एक प्रोटॉन का जो मास है, the mass of one proton is equal to 1 unit, that is mass of one hydrogen atom, that is 1 unit. So 2 protons, mass of 2 protons is equal to 2 atomic mass units. Mass of 3 protons is equal to 3 atomic mass units. Mass of 12 protons is equal to, very good, 12 atomic mass units. तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही एटॉमिक मास होना चाहिए किसका, एटम का। एंड इट वाज बिलीव्ड अप टू 1930 कि एटम का जो मास है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। लेकिन फिर क्या हुआ, व्हेन द मास ऑफ हाइड्रोजन वाज फाउंड, हाइड्रोजन मास वाज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। Hydrogen mass was equal to mass of proton. Why? Because in hydrogen there is only one proton. That is, एक प्रोटॉन के मास के बराबर नेचुरली होगा। वो मास ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। एंड द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब जब दूसरा एलिमेंट लेंगे इन द सीरीज, दैट इज हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2। एटॉमिक नंबर मीन्स इसमें 2 एटम्स हैं, यानी इसमें 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स छ तेल 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम्स में आसान 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। प्रत कुन एटम्स में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कुन एलिमेंट्स में 2 एटम छ तो दैट मीन्स वहां पे कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम के एटम में है 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल, न आसनस बराबर। अब हीलियम का जो मास है वो किनकी बदौलत है, इट शुड बी बिकॉज ऑफ दिस 2 प्रोटॉन्स। अब एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास अभी हमने पढ़ा दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 2 प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास होना चाहिए कि होगा कितना, 2 यूनिट्स। तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, 2। हीलियम का जो एटॉमिक मास होना चाहिए 2। लेकिन जब हीलियम के एटम का एटॉमिक मास मेजर किया जाता है, जब हीलियम एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास मेजर किया जाता है, तो इट इज फाउंड दैट एटॉमिक मास इज 4। इसी तरह अगर हम और एक एलिमेंट लेंगे, सपोज मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, दैट मीन्स देयर आर 12 प्रोटॉन्स। अगर मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन मास 1 यूनिट, 12 प्रोटॉन को मास 12 यूनिट, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होना चाहिए कितना, 12। अब जो 12 इलेक्ट्रॉन्स उसमें है उनका मास नेग्लिजिबल है, उनको इग्नोर करें, तो फिर एटम का जो मास है दैट मस्ट बी अराउंड 12 यूनिट्स। चलो इससे इलेक्ट्रॉन हम 12 यूनिट मास अगर इस कैलकुलेट करो, 12.01 12.03, लेकिन अराउंड 12 ही होगा। लेकिन when atomic mass of magnesium was found it is almost equal to 24 atomic mass units। तो ये 24 कहां से आ गए। अब ये सवाल 2 हो सकते हैं, या तो इसमें प्रोटॉन्स डबल हैं, प्रोटॉन्स डबल हो ही नहीं सकते। अगर प्रोटॉन्स डबल होंगे तो फिर इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये है कि अगर इसमें 12 प्रोटॉन्स ही हैं, एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो 12 का होना चाहिए 12, तो एटॉमिक मास होना चाहिए था 12, लेकिन 14 कहां से आ गया। हाइड्रोजन के बगैर जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया, इट वाज फाउंड दैट द एटॉमिक मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डबल ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी हाइड्रोजन के बगैर जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया, वहां पर यह देखा गया कि अगर उसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मास निकल गया है ऑलमोस्ट 23, 22 पॉइंट समथिंग है, ऑलमोस्ट 23, ठीक, या 22। इसी तरह अगर किसी का एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक नंबर है 20, दैट इज 20 प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक मास कितना निकलता है 40। दिस लेड टू द
confusion that there must be something in the atom. अगर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो वहां तक ठीक है क्योंकि चार्ज हैं दोनों के अंदर और अपोजिट चार्ज हैं, उससे एटम न्यूट्रल है, ठीक हो। लेकिन एटम के अंदर जो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, तो दैट मीन्स इट इंडिकेटेड, इनको पाना इंडिकेट कि एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल भी है जिसका चार्ज के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मास के साथ कोई ताल्लुक है। यानी कुछ तान चीज एटमक वजन हरान, यानी कुछ तान चीज एटमस मज यम सत एटमक वजन हरान, चार्जस पे फर्क पेवान। यानी इन आसन सह पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हरान कह, मगर मास चेंज गसान। एंड इट वाज a scientist named Chadwick in 1932. It was in 1932 Chadwick who found that there is one more particle present in the atom, which is electrically neutral. यानी ब्याख पार्टिकल हसा अथी एटमस मज प्रथ कुन एटमस मज युस हसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी न तथ पॉजिटिव चार्ज न नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मगर तमुक रोल क्या तथ हसा मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, तमुक मास हसा ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, सच हसा अथी एटमस मज प्रेजेंट। एंड दैट एटम, दैट particle that is present in the atom having no charge, a subatomic particle जो कि एटम के अंदर मौजूद हैं, having no charge but mass almost equal to that of proton, having mass almost equal to that of proton। यानी कैडविकन क्या वोन दपन अगर एटमस मज एटमिक मास नेरान ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन खोत, तो देयर मस्ट बी सम वन मोर पार्टिकल, देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल यमुक नो चार्जस मज कहीं ते रोल हैविंग नो चार्ज, तेल केस बल्कि तमुक तथ मास, और मास कोत ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तवे हसा अगर कुछ एटमस मज प्रोटॉन 7 मास नेरान ऑलमोस्ट 14, अगर एटमस मज एटमिक नंबर 6 इन प्रोटॉन 6 मास नेरान ऑलमोस्ट 12। यह क्या, क्योंकि अत मज हसा ब्याख सब एटमिक पार्टिकल यथ मास इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, तवे हसा नेरान मास इन प्रोटॉन खो डबल। That element, that subatomic particle was called as neutron. But this is how third subatomic particle was discovered by Chadwick. कि ये charge क्या है? अब इसकी जो property है, what is the charge of neutron? It is no charge, having no charge. But what is the mass of neutron? Mass of the neutron is equal to that of the proton, and that is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 27 kg. This is the mass of proton as well as mass of neutron. Mass of proton and mass of neutron. Mass of proton is almost equal to mass of neutron, and the absolute mass of both is 9.1 into 10 raised to power minus 27 kg. Or comparatively we can take as 1 unit, atomic mass unit. One atomic mass unit is the mass of proton as well as the mass of neutron. वो अगर एटम के अंदर जो मास है, now the mass of the atom is because of its proton and neutron. अब अगर सवाल पूछा जाएगा why is the hydrogen lightest of all the atoms? Because in hydrogen atom there is no neutron. Hydrogen atom does not contain any neutron, इसलिए उसका जो मास है it is only because of protons. Rest of the atoms जो हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हैं, और उन न्यूट्रॉन्स जितने भी होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ होंगे, उतना उसका वजन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो हम एटॉमिक मास देखते हैं मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। वो एट द कंक्लूजन वी कैन से एटम इज द यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ व्हाट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड neutron. The atom is the unit of 3 subatomic particles, proton, electron and neutron.
Proton is positive charged particle present in the atom, electron is negatively charged particle present in the atom, and neutron is neutral particle present in the atom. This is the structure, we can say the composition, not the structure but rather the composition of the atom. इसलिए हम atom की definition में कहते हैं atom is a unit, atom is the smallest unit. और unit मैंने पहले भी कहा, unit is something which is made up of two or more than two substances. When they come together, they form a unit. तो यहाँ पर atom क्यों unit है? Because three subatomic particles, proton, electron and neutron, come together to form a group, and that group is called the atom. Hope you understand the discovery of electron, proton and neutron, and inshallah next lecture we will study how these electron, proton and neutrons are arranged. That is the structure of atom. Thank you.